बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक करने लगे हैं that is related to factors of production, right? In economics we know that this is a very important topic because any production which is going to take place cannot happen without these factors of production. According to Cambridge syllabus, under factors of production, we need to cover factors of production and their reward. Means we need to cover the definitions of all these four factors of production and the rewards what they get. Along with that, we need to cover about the mobility of factors of production and the quantity and quality of factors of production and how these quantity and quality can be increased or decreased. Now in this video we are only going to cover this 1.2.1 up till here, like factors of production, their reward and the mobility of factors of production. The remaining this part will be discussed in another lesson. So here we know that there are mainly four factors of production. Number one is land, then labor, third one is capital, and the last one is enterprise, or we can say it as organization. So let's come towards land, that what the land is. First of all, we are going to discuss about its definition and then the reward of it. So land is all natural resources which are used in production process. Like land is not just a piece of land. एक ज़मीन का टुकड़ा ही land नहीं है. In economics, we know that land are all natural resources, mean mineral, forest, ocean, anything. All these things are come under land which are not man-made. And the reward for land is rent. Remember this, that the reward for land is rent. Second is labor. So labor is all human, physical and mental efforts which are used in the production process, right? Physical and mental effort means कोई मजदूर है बाहर काम कर रहा है, so that he is using his physical efforts. But like I am a teacher, I am working. I am not physically working, but I am working from my brain. So I am putting my mental efforts. So that would also come under labor. So it says that all the skills, चाहे वो doctor है, lawyer है, banker है, insurance company है, then police, these are all providing us the services. ठीक है? So this is also a labor, and the reward for labor is wages. The third one is capital. These are all man-made resources which are used in production process. लैंड के बारे में हमने कहा था ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, और यहाँ पे कैपिटल में हम क्या कह रहे हैं, ऑल मैन मेड रिसोर्सेस, जैसे कि एंड विच आर यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस. जैसे कि कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, लाइक चॉकलेट प्रोड्यूस करनी है, सो इट मीन्स चॉकलेट को प्रोड्यूस करने के लिए द मशीनरी, द टूल्स, द बिल्डिंग इक्विपमेंट्स, एवरीथिंग विल कम अंडर लैंड, oh sorry, under capital. And the reward for capital is interest. ये आपने याद रखना है कि what is the reward for land, what is the reward for labor, what is the reward for capital, and the last we are going to discuss about the what is the reward for enterprise or an organization. So what an organization or an enterprise is? Enterprise is the one who combines all other factors of production, and it is one who is going to take risk. He is going to think about the ideas, the innovative ideas. अब हम कह रहे हैं कि entrepreneur के जो कि risk ले रहा है, ठीक है, और he is the one who is combining all other factors of production. अब entrepreneur is a person. मैं अब आपको कहती हूँ हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक लेबर है या फिर ये एक एंटरप्रेन्योर है, मतलब एक बिजनेसमैन है. ऑब्वियसली लेबर का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है काम में. लेबर इज वर्किंग ओनली फॉर टू गेट द वेजेस, बट एन एंटरप्रेन्योर इज द वन हु इज टेकिंग रिस्क. Labor is not taking risk. Entrepreneur is the one who is going to get the profit. Entrepreneur is the one who is
कंबाइनिंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लेबर ये काम नहीं कर रही है, ये काम मेन कौन कर रहा है? एंटरप्रेन्योर कर रहा है, एक बिजनेसमैन कर रहा है, राइट? सो मेन डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड लेबर इज दैट the entrepreneur is a risk taker, right? And the reward for entrepreneurship or enterprise is profit. Now, moving forward, we need to discuss about the mobility of factors of production. First of all, we need to know about that what mobility means. मोबिलिटी मीन्स कि आप किस तरह से फैक्टर्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट कर देते हो, या फिर एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट कर देते हो. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें पता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन है. सो इनकी मूवमेंट आइदर आप इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, या फिर इनको एक जॉब से या एक टाइप के काम से दूसरे टाइप के काम में शिफ्ट कर रहे हो. ये दो तरह की मोबिलिटीज होती हैं, जिसमें से एक को हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी एंड द नंबर सेकंड इज जियोग्राफिकल मोबिलिटी. In occupational mobility, we say that in this occupation का मतलब क्या होता है? जॉब. कौन सी जॉब? What is a business? ठीक है, कौन सा काम आप कर रहे हो. Let's suppose अगर मैं अपनी जॉब टीचिंग से छोड़ के I came to the being a lawyer, ठीक है, तो इसका मतलब मैं अपना क्या चेंज कर रही हूँ? प्रोफेशन चेंज कर रही हूँ. ऑक्यूपेशन मीन प्रोफेशन. सो इफ यू आर चेंजिंग योर प्रोफेशन, दैट मीन्स ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी. ठीक है. एंड इफ लेट्स सपोज आई एम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, दैट वुड come under geographical mobility. So here what it says, occupational mobility is the mobility of factors of production to move from one type of job or industry to another. एक काम जहाँ पे वो कर रहे थे, लेट्स सपोज अगर लेबर एक जगह टीचिंग सर्विसेज दे रही है, तो दूसरी जगह जाके वही लेबर जो है आफ्टर गेटिंग एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल्स, तो वही एक लॉयर भी बन सकती है. सो दैट इज ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी. Geographical mobility, as I told you earlier, that it is the movement from one location to another. Let's suppose if I'm moving from Pakistan to Canada for a job, so that would be a geographical mobility. और इसके लिए बहुत सारे factors हैं which influences these. Sometimes people prefer to move to the other countries and sometimes people do not, right? So transportation, housing availabilities, like different countries में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी available हैं, so people would love to move to the other countries. But sometimes there are other factors which are creating hindrances. So these are legal barriers, means you have immigration laws. If you are not going to fulfill those immigration laws, तो फिर आप shift नहीं करते हो. And the last is family or culture ties, मतलब आपका family से natural love and affection है, तो you do not want to move to the other country. अच्छा, जैसे कि हमें पता चल गया कि ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या है और जियोग्राफिकल मोबिलिटी क्या है. ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्रोफेशन टू एन अदर, एंड जियोग्राफिकल मोबिलिटी इज shifting from one location to another. Now we are going to discuss about all these four factors of production in detail about the occupational mobility and geographical mobility. So first of all, land की occupational mobility means land can be used for different purposes. Yes, it can be used for different purposes, but it's very difficult. So it need major changes. जैसे कि अगर एक फार्म लैंड है, उसको मैं बिल्डिंग बनाना चाहूँगी, तो for that I need to make major changes to convert that. It is not that easy. हो जाता है, but इतना easy नहीं है. Geographical mobility is very low. Land cannot move from one place to another. Then labor. अच्छा, labor, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिए. If I am a labor, if I want to change my career, I want to become a lawyer rather than being a teacher, so I need to learn the skills. First of all, I will learn the skills, then I can transfer my career. Otherwise, it's not that easy. And if I want to relocate myself, right, from Lahore to Karachi, or from, let's suppose, Pakistan to Canada,
or from Pakistan to China, let's suppose. So there are certain barriers, like I can't move, but there are certain barriers as well, like language barrier, cultural barriers, or legal barriers. Then, speaking about capital, capital is literally very high occupationally mobile, because let's suppose if I am using a vehicle for the pick and drop in a teaching sector, now I am using this vehicle in an industry, right? So that is highly, occupationally mobile. Then geographical mobility. They can easily transport it from one place to another. बस मसला क्या आता है, प्रॉब्लम क्या आती है, कुछ लॉजिस्टिक के और रेगुलेटरी रूल्स होते हैं which need to be followed. Otherwise, capital can be easily mobile from occupational to geographical, means in both manner, occupationally and geographically. Last but not least is enterprise. Enterprise is a businessman. So again, बिजनेसमैन को जहाँ पे लगेगा कि इस बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा है, वो फॉरन चेंज कर लेगा, अपने डाइवर्ट कर लेगा, अपने नॉलेज गेन करेगा और आराम से जो है वो बिजनेस डिफरेंट चेंज कर लेगा, प्रोफेशन चेंज कर लेगा. लेट्स सपोज अगर पहले वो बिजनेस कर रहा था मास्क बनाने का, अब वो बिजनेस कर रहा है राइफल्स बनाने का. इफ he have the knowledge and the capital to start that, so that is quite easy for them. In geographical mobile, जहाँ पे legal barriers कम होंगे, market entry easy होगी, तो entrepreneur would love to do business over there. Like जहाँ पे जिस country में tax कम profit के ऊपर देना है, तो they love to do job over to start business over there. So these are main factors of production. अच्छा, अब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी क्यों हैं? जब हमें पेपर में क्वेश्चन आता है अबाउट द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो याद रखना है कि हमने मोबिलिटी के अंदर वी डू नॉट नीड टू थिंक अबाउट के मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, तो एक जगह से दूसरी जगह. वी नीड टू थिंक कि हमने पेपर के अंदर, हमने बुक में पढ़ा था कि अच्छा, मोबिलिटी के अंदर दो तरह की मोबिलिटीज होती हैं. एक होती है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी और एक होती है ज्योग्राफिकल मोबिलिटी. नाउ they are talking about the factors of production. So don't only think about कि labor move कर रही है. भाई, we have 4 factors of production. So we have to think in this way that all these factors of production can move from one place to another. ठीक है, तो आपने इन सब चीजों को डिस्कस करना है. Now there is a tip कि अच्छा, मोबिलिटी के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो अगर क्वेश्चन मोबिलिटी का ना है, इमोबिलिटी का है, दैट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस और फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, तो आप इसी का ऑपोजिट कर दो, राइट. लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल है कि अगर ट्रेनिंग कम होती है, तो इट मीन दैट दे आर द लेबर इज नॉट गोइंग टू बी ऑक्यूपेशनली मोबाइल, दे वुड बी ऑक्यूपेशनली इमोबाइल. इस तरह अगर ट्रेनिंग इंक्रीज होती है तो देयर वुड बी मोबिलिटी ऑफ लेबर. तो आप उसी को ऑपोजिट वे में लिख दोगे तो यू कैन एक्सप्लेन इट इजीली, राइट. अच्छा, यहाँ पे अब हम इसको स्टॉप करते हैं. एंड दिस नेक्स्ट, द कॉजेज ऑफ चेंज इन द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेसन. I hope that you all are staying safe at home. Stay safe. Okay, Allah Hafiz. See you in another video.